Hey there, welcome to another episode of Coding with Codecat. This is Ravi. आज के सेशन में we'll understand what is a map and what is the behavior of a map. जो कोड आज के सेशन में यूज होगा वो ऑलरेडी GitHub और Google Drive पे अवेलेबल है. And if you need the code, what you can do is check the video description, click on the link and download the code for you. Now before we begin with this session, if you like the work that I'm doing, if you're learning something from my videos, then please do subscribe to the channel and share it with your iOS group. That being said, let's begin our today's session. मैप एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जिसे आप एरेज और डिक्शनरीज के साथ यूज कर सकते हो. आई थिंक हर एक शिफ्ट प्रोग्रामर को ये मालूम होना चाहिए कि हायर ऑर्डर फंक्शन होता क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर फंक्शन. तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने वही एक्सप्लेन किया था. सो इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियो तो प्लीज चेक दैट आउट बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर. मैप को आप एरेज और डिक्शनरीज के साथ यूज कर सकते हो एंड इट इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैप फंक्शन को इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं एंड दिस इंस्ट्रक्शंस आर पास्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लोजर. जो इंस्ट्रक्शंस आप एज अ पैरामीटर पास करोगे वो मैप फंक्शन को ये बताते हैं कि उसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है. सो बेसिकली यू आर सेटिंग सम रूल्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. और इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद मैप ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू कर देगा और एंड में एक सेपरेट एरे रिटर्न करेगा. इस सेपरेट एरे को मैंने अंडरलाइन क्यों किया है इसका रीजन हम डेमो के वक्त समझेंगे. सो टू विजुअली प्रेजेंट दिस, लेट्स से मेरे पास एक इंटीजर एरे है और इस इंटीजर एरे को मुझे स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करना है. यू कैन डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ फॉर लूप, बट विथ मैप फंक्शन इट इज जस्ट वन सिंगल लाइन ऑफ कोड विथ इंस्ट्रक्शन. इन टुडेज डेमो हम मैप वर्सेस फॉर लूप का भी एक एग्जांपल देखेंगे और क्योंकि बात डेमो की हो रही है और मैप फंक्शन के बारे में हमें थोड़ा आइडिया आ चुका है, इट्स टाइम टू स्विच टू एक्सकोड एंड प्ले विद दिस फंक्शन. सो लेट मी स्विच टू एक्सकोड. लेट्स डू एन इंटीजर एरे टू अ स्ट्रिंग एरे कन्वर्जन डेमो. हम फॉर लूप और मैप ये दोनों यूज करेंगे सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन देम. सो लेट्स से आई हैव ए नंबर्स वेरिएबल of the type integer array and let me give it a value. So let's say 1 2 3 and 4, and now I have a function. I'll call it convert to string और ये जो function है ये return करेगा string array. So सबसे पहले हम लोग for loop का example देखेंगे and then we'll switch to map. Well, in numbers and I'll do a typecasting over here. But हमारा ये जो function है it is returning a string array. So what you have to do is you have to create another variable. I'll call it result, which is of the type string array. Let me initialize this and then let's say result dot append and then return result. And right now I want to print the output of this convert to string function into the console, so I'm going to use debug print for that. Now when I run this, आप देख सकते हो कि हमारा जो इंटीजर एरे है वो एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट हो चुका है. अभी सेम एग्जांपल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप. सो लेट मी स्टॉप दिस एंड आई विल क्रिएट वन मोर फंक्शन ओवर हियर, दैट इज कन्वर्ट टू स्ट्रिंग यूजिंग मैप. और ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न करेगा. I'll say return number and I'm going to use the map function, and over here I'm going to pass the instructions with the help of closures. मैं shorthand argument use करूंगा, so I would go ahead and write string and $0. And now what I want to do is I want to call this function and print the output of this function into the console. So let us use debug print for that again. और मैं इसे comment कर दूंगा. Now let me go ahead and run this. We have successfully converted integer array to a string array with the help of map. और यहाँ पे let me scroll up, और यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख सकते हो between for loop and map. हमें for loop में थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, बट with map it was very simple to do this transformation. ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक टाइप का एरे दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो ही आप मैप यूज कर सकते हो. एक और एग्जांपल देखते हैं मैप का. सो लेट्स प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल, बट बिफोर दैट लेट मी गेट rid of this code that I have over here. So let me add some values over here, 5 6 7 8 9 and then 10. I'll create a function multiplication which is going to accept an integer parameter. I'll call it value. और ये जो फंक्शन है ये एक एरे रिटर्न करेगा, दैट इज इंटीजर. सो द एंटायर कॉन्सेप्ट इज कि अगर मैं वैल्यू 2 पास करूं तो 2 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, अगर मैं वैल्यू 5 पास करूं तो 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए. एंड यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ मैप. I'll say numbers dot map $0. Again I'm using shorthand argument multiplied by value.
So right now I'm going to call this function and I'll be using debug print for that. Multiplication, and I want to print the table of 2. Now let me run this. So as you can see with map data transformation is very easy. I think developers की सबसे बड़ी लड़ाई closures के syntax को समझने में है, and I have explained that in the most simplest way in my closure tutorial. आप closure का मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो by clicking on the I button on the top right hand corner. यूजुअली इन एनी प्रोजेक्ट जब आप एपीआई या डेटाबेस से डेटा फेच करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि एरे के किसी एक इंडेक्स में वैल्यू निल आ सकती है. सो लेट्स सी हाउ मैप डील्स विद निल वैल्यूज विद अवर मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल. सो लेट मी गो अहेड एंड कन्वर्ट दिस इनटू एन ऑप्शनल इंटीजर एंड लेट मी चेंज दिस वैल्यू टू निल. सो राइट नाउ द स्विफ्ट कंपाइलर इज गोइंग टू गिव यू एन एरर. वो ये बोलेगा कि ये जो नंबर्स है इट इज एन ऑप्शनल इंटीजर, और ये हो सकता है कि लाइक ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त ये जो जीरो वैल्यू है यहाँ पे कोई भी एक इंडेक्स की वैल्यू निल हो सकती है. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस केस इज यू हैव टू प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू. सो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस. You can provide a default value and that's it. So now when I run this, so you can see map can also deal with nil values. We all know that map को आप सिर्फ array या dictionary के साथ use कर सकते हो, but let me ask you this, क्या मैं map को एक simple integer value के साथ use कर सकता हूँ? Let's find out. So let me get rid of this. इसे delete कर दूंगा मैं, और यहाँ पे एक simple integer variable बनाते हैं. I'll call it number. This is of the type int and I've assigned value 1. So अभी मैं क्या करूँगा, ये जो number है, I'm going to use a map function with this number. So I'll say number dot map, and as you can see I cannot use map with a simple integer, which completely makes sense क्योंकि ये जो number है ये कोई array या dictionary नहीं है. But what if I do something like this? So let me make it optional, and now let me delete this. And over here you can see I can use map with an optional integer type. So this brings us to the question, why can I use it with an optional int and not with a like a regular int in general? What's the technical reason behind this? And the reason is Swift में दो टाइप के map function है. One that works with an array and dictionary as you have already seen, and the other that works with an optional type. Well, to be honest, मैंने अभी तक मेरे प्रोजेक्ट में ऑप्शनल मैप का यूज़ नहीं किया है, बट अगर आपने किया है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करना. और अगर आप ऑलरेडी मैप फंक्शन को यूज़ कर रहे हो और ऑप्शनल मैप के बारे में आपने पहली बार इस चैनल से सुना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो. और ये स्पेशल मैसेज उनके लिए जो वीडियो देखते तो हैं बट अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन आए. चलिए अब चैनल प्रमोशन को यहीं पे एंड करते हैं और मैप पे फोकस करते हैं. मैप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम तो बहुत ही आसान कर देता है, ये बात तो सच है. अगर आप ये डेमो देखकर ये सोच रहे हो कि अपने प्रोजेक्ट के कोड में जहाँ कहीं पे भी आपने फॉर लूप यूज़ किया है फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन उसे आप मैप से रिप्लेस कर दोगे, तो अपने प्रोजेक्ट के कोड में ये क्रांतिकारी काम करने से पहले लेट मी शो यू वन बिहेवियर ऑफ मैप जिसको देखने के बाद हो सकता है आपकी ये सोच बदल जाए. सो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस एंड लेट मी पेस्ट दिस कोड. लेट मी स्टॉप दिस. आपके सामने जो कोड है उसमें मेरे पास एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है, एक फंक्शन है जो एक एम्प्लॉय एरे रिटर्न करता है विद सम वैल्यूज. अब मुझे क्या करना है कि इन एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज करनी है विद 1000 रुपीज. अब ये बात तो सच है कि यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्म होगा बट सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का. सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई यूजिंग मैप फॉर दिस यूज केस. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल ओवर हियर एंड आई विल नेम इट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट मैप. अब मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड आर्गुमेंट यूज नहीं करूंगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आलसी होते जा रहा हूँ. आई विल से employee in employee dot salary into 1000. And now what I'm going to do is I'm going to print this result. Debug print result. So over here you can see जब मैं result update कर रहा हूँ तो map जो array return कर रहा है वो कोई employee array नहीं है, it's a double array. और ये इसलिए है क्योंकि आपने मैप को सिर्फ सैलरी वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा था. जो सैलरी है एज यू कैन सी उसका जो डेटा टाइप है इट इज डबल, और इसी वजह से जो मैप है आपको एक डबल एरे रिटर्न कर रहा है. इस कोड से ये पता चलता है कि मैप जो एरे रिटर्न करता है उस एरे का डेटा टाइप आपके इस इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है. अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन में मैंने सेपरेट एरे वर्ड को हाईलाइट किया था और वो इसी वजह से किया था. मैप आपके ओरिजिनल एरे को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है. इन दिस केस एम्प्लॉइज इज अवर ओरिजिनल एरे. इनफैक्ट लेट मी प्रूव दिस टू यू बाय प्रिंटिंग एम्प्लॉइज एंड रिजल्ट इन दी कंसोल. Well, I think मैं अभी भी multiplication के demo में हूँ because if I do something like this, all my like all the employees will be very much happy with this, and I think this is one of the reason why you need test cases in your project. So let me correct this, and right now I'm going to print employees on the console. I'll say employees is equals to, it's going to be employees, and now let me call this function
update employee salary, and now let me run this. So as you can see, जो रवि है उसकी सैलरी इट इज स्टिल 1500 एंड जो कोडकैट 15 है उसकी सैलरी अभी भी 2500 है, बट ओवर हियर दैट इज इन दिस रिजल्ट यू कैन सी कि जो सैलरी है वो इंक्रीज हो चुकी है और यहाँ पे हमें सिर्फ एक डबल एरे मिला हुआ है. सो आई थिंक हर iOS डेवलपर को मैप के इस बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए. जिस एरे पे मैप फंक्शनैलिटी अप्लाइड है, मैप उस एरे को ट्रांसफॉर्म नहीं करता. आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं मैप को, उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे मैप एक नया एरे क्रिएट करता है. प्रोग्रामिंग में हर एक फंक्शन की अपनी वैल्यू होती है. जस्ट बिकॉज कोई फंक्शन एक लाइन में आउटपुट रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह उसी को यूज करो. मेरी ओपिनियन ये है कि अगर आप पूरा एरे या डिक्शनरी का डेटा एक साथ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, या फिर एरे या डिक्शनरी में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि इस एम्प्लॉय एरे में मुझे सारे एम्प्लॉयज के सिर्फ नेम चाहिए, तो ऐसे सिनारियोस में मैप फंक्शन इज योर बेस्ट फ्रेंड. If you have any question regarding map, then please feel free to email me. My email ID is codecat15@gmail.com. या फिर आप आपका सवाल as a comment भी मुझे पूछ सकते हो. If you're new to the channel, then please subscribe and don't forget to like this video. That being said, thank you so much for watching this. Have a nice day and happy coding. Bye bye.